first stroke, by the way. Okay. Next question was simple, right? About atom. So electron relative charge to its minus 1. Relative mass, so you can say 1 over 1840, 1850, 1860, whatever. Neutron charge, no. Or proton ka mass relative, 1. Part B. That's a very easy question, by the way. What is the nuclear number for particle A? Nuclear number क्या होता है? Atomic mass, sum of protons and neutrons. Yeah? So I think it's 85. So ये protons हैं, ये neutrons हैं, दोनों को add कर दें. Explain why particle B is a negative ion. Because it has more number of electrons than protons. Is that so? Right? So it has more electrons than protons. Which two atoms are isotopes of the same element? यानी कि उन दोनों का atomic number same होना चाहिए, ठीक है, और उनका न्यूट्रॉन नंबर फर्क होना चाहिए. So बेसिकली देखें, इन तीनों के सेम एटॉमिक नंबर्स हैं, लेकिन इन दोनों का न्यूट्रॉन नंबर सेम है, ये एक ही एलिमेंट है, बस फर्क है कि एटम और आयन है, लेकिन इसके न्यूट्रॉन्स फर्क है, isn't it? So we can say, उसने क्या ऊपर से एटम्स, फिलहाल से ये एटम है, ये आयन है, और ये एटम है, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन से आप जज कर लेते हैं. So therefore the answer is C and E, right? So they have same number of protons, they have same number of protons, but different number of neutrons. I hope you know that जो atomic number होता है, it is unique to an element, right? And isotopes क्या होते हैं, which have same atomic number but different mass number. यानी कि same उसके protons होंगे लेकिन different neutrons होंगे. And I hope you know that कि isotopes की physical properties फर्क होती हैं, like mass. लेकिन chemical properties same होती हैं. Why? Because they are, I mean, इनके electrons same and they are same elements. So the chemical property is same, but the physical property is different of isotopes. Please don't forget it. Show the previous slide. This is the previous slide. Great. Moving on. Protons, but different number of neutrons. That's so. Question 3. So acids are neutralized by alkalis. Write the ionic equation for the reaction in acid and alkali. Simple, I think. Acid is H positive, alkali is OH negative. So we can say H positive plus OH negative, it gives you H2O. B part. Sodium sulfate is a soluble salt that can be prepared by using a titration method. Of course, soluble salts जो होती हैं, हम उसको करते हैं prepare titration method से. Insoluble salts को हम filtration कर लेते हैं precipitation method. Name a sodium compound and the acid that can be used to make sodium sulfate. तो sodium का sodium compound हो गया NaOH, let's say.
सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सल्फेट कहाँ से आया? लेट्स से सल्फ्यूरिक एसिड से, किसने क्या एसिड मेंशन करना है आपने, तो वी कैन से इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड and sulfuric acid. Describe how the titration method is used to prepare a colorless solution of sodium sulfate. Okay. तो आई थिंक वो आपको याद होगा कि लेट्स से आप टाइट्रेशन करते हैं, लेट्स से फ्लास्क में आपने बेस रख ली, ऊपर से आपने एसिड डाल दिया, फिर आपने ऐड किया एसिड जब तक इंडिकेटर ने कलर चेंज नहीं किया, एंड रिपीट द सेम वॉल्यूम्स बट नो इंडिकेटर, isn't it? So you say that add alkali NaOH to the conical flask and titrate it with sulfuric acid in the burette. तो यहाँ पे some students have a question, क्या हम सोडियम का ऑक्साइड दे सकते हैं rather हाइड्रोक्साइड? देखिए उसका क्वेश्चन क्या है, सोडियम सल्फेट is a soluble salt that can be prepared by using a titration method. If he wants to use a titration method, so he needs to have acid and base. Sodium oxide is solid, sodium hydroxide is aqueous, so you need to have two aqueous solutions, acid and base. That's why it should be only sodium hydroxide, it can't be sodium oxide. If it's sodium oxide, we consider it wrong, right? Because जो titration aqueous solutions की होती है, solid की नहीं होती. ठीक. Add acid to alkali until indicator shows it is neutralized. यानी जब इंडिकेटर कलर चेंज शो करेगा, यानी कि आपके पास फ्लास्क है, फ्लास्क में एल्कली है और ऊपर से आप एसिड डाल रहे हैं और इसमें इंडिकेटर के ड्रॉप्स भी हैं. ठीक. अब आप एसिड डालते रहेंगे जब तक इंडिकेटर कलर चेंज करेगा. जैसे ही कलर चेंज करेगा यू स्टॉप एडिंग एसिड. अब आपको आइडिया होगा कि इतना वॉल्यूम ऑफ एल्कली इतने वॉल्यूम ऑफ एसिड से रिएक्ट करती है. ठीक हो गया. तो इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट इन दो वॉल्यूम्स को मिक्स करते हैं, isn't it? So now repeat using same volumes of acid and base with no indicator. I just got 3 marks, guys. 3 marks की चीज़ क्या should make clear कि आपने बताया कि हम टाइट्रेशन यूज़ करने लगे हैं और हमने एल्कली ऐड किया, फ्लास्क में सल्फ्यूरिक ऊपर से ऐड कर रहे हैं until the indicator is showing a color change, और लास्ट वन रिपीट यूजिंग सेम वॉल्यूम किया. So we score 3 marks. यानी कि आपने फर्स्ट मार्क स्कोर किया कि आपने बताया कि फ्लास्क में एल्कली है और ब्यूरेट में एसिड है. सेकंड मार्क आपने बताया कि आपने एसिड ऐड किया जब तक इंडिकेटर ने कलर चेंज नहीं किया. थर्ड आपने मार्क स्कोर किया कि अब आप रिपीट करें एक्सपेरिमेंट सेम वॉल्यूम्स होकर रिएक्ट किए इन अनदर एक्सपेरिमेंट विद नो इंडिकेटर एडेड. Part 3. Describe how a sample of pure sodium sulfate crystal can be made from aqueous sodium sulfate. Again, guys, it's static crystallization. Evaporate solution until until saturation point, right? और फिर आप उसे कूल करें at moderate rate और फिल्टर ऑफ कर लें. Simple. So we can say heat the solution to saturation point, cool the solution at moderate rate
and filter of the crystals. ठीक है, और फिर आप भी कहते हैं कि dry the crystals in folds of filter paper. Okay, brilliant. Now, part C. In an experiment, 20 cm³ of 0.55 mole per dm³ barium nitrate, यानी कि ये was added to excess sodium sulfate, यानी कि सल्फेट की excess में. Calculate the maximum mass of barium sulfate that can be produced. इसका कितना mass बनेगा? तो आप पहले मोल्स निकालें बेरियम आइंस के. बेरियम सल्फेट एक ही बात है. तो मोल्स कितने आ जाएंगे? तो इट इज 0.55 C into V into 20 by 1000. ठीक हो गया. ये कितने आ गए? ये मोल्स आ गए 0.011. जो मोल्स बेरियम आयन के हैं वही मोल बेरियम सल्फेट की भी होंगे बिकॉज 1:1. तो मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट विल बी सेम. तो mass of barium sulfate 0.011 into its molecular mass, है ना. तो molecular mass दिया हुआ 233, तो यहाँ लिख लेते हैं 233. So guys, my answer is okay, 2.56 grams. Part 2. A mass of 1.92 gram of barium sulfate was obtained. Calculate the percentage yield of barium sulfate. So I think it's 1.92 experimental yield. Actual yield 2.56 into 100. So I think this comes up to be 74.91. Perfecto. Easy. I hope you know that how to find experimental yield. How to find percentage yield. So it's experimental yield over theoretical yield into 100. Theoretical yield जो आप stoichiometry से निकालते हैं, that is called as theoretical yield. Question 4. So calcium chloride is an ionic compound. State the electronic configuration for each ions. ठीक हो गया. तो ये calcium ion तो Ca2 positive है और ये Cl negative 1 है. ये 20 होता है, ये 17 होता है. तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसमें आ गए 288 और ये भी हो गया 288. I think both are isoelectronic. Both have same number of electrons in their ions. Molten calcium chloride is electrolyzed. इनके calcium ion and chloride ion. Molten. Reaction at the negative electrode. ये आप कैथोड पे कैटन आएगा तो calcium ion plus 2 electrons. It gives you calcium. और यहाँ पे एनन आएंगे तो 2 chloride ions give you chlorine plus 2 electrons. Predict the products of the electrolysis of concentrated aqueous calcium chloride. Aqueous का मतलब है कि आपके पास calcium chloride H positive OH negative. यहाँ से H जाएगा और concentrated तो ये chloride जाएगा. तो it's hydrogen and chlorine. Explain using ideas about the structure and bonding why calcium chloride has a high melting point. तो भाई वो structure क्या है? Giant ionic है, ठीक है, और उसमें strong ionic bonds है, isn't it? So basically calcium chloride is a giant ionic compound with strong ionic bonds between oppositely charged ions. And let's go 2 marks. यानी कि आपने बताया कि giant ionic है और आपने बताया कि strong ionic bonds है, तो you're scoring 2 marks for that. You should know that which things carry marks. Whenever you're writing an answer, right? This should be very clear, like very clear. This question is more like organic compounds. Ethanol and butanol are both alcohols. Of course, yes. They belong to alcohols homologous series.
Describe the manufacture of ethanol from ethene. तो I think आप ethene को react कराएं steam के साथ in phosphoric acid जो catalyst और I think heat, right? So you say that के ethene is reacted with steam under heat. Okay, I'll go back. Find आपका percentage yield. तो it's experimental yield over theoretical yield into 100. Theoretical yield जो कि आप stoichiometry से निकालते हैं, that is called as theoretical yield. Question 4. So calcium chloride is an ionic compound. State the electronic configuration for each ions. ठीक हो गया. तो ये कैल्शियम आयन तो Ca2 पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव वन है. ये 20 होता है, ये 17 होता है. तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसमें आ गए 288 और ये भी हो गया 288. I think both are isoelectronic. Both have same number of electrons in their ions. Molten calcium chloride is electrolyzed. यानी कि calcium ion and chloride ion. Molten. Reaction at the negative electrode, I mean the ये आप कैथोड पे कैटन आएगा तो calcium ion plus 2 electrons, it gives you calcium. और यहाँ पे anion आएंगे तो 2 chloride ions give you chlorine plus 2 electrons. Predict the products of the electrolysis of concentrated aqueous calcium chloride. Aqueous का मतलब है कि आपके पास कैल्शियम क्लोराइड H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ से H जाएगा और कॉन्सेंट्रेट है तो ये क्लोराइड जाएगा, तो इट्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. Explain using ideas about the structure and bonding why calcium chloride has a high melting point. तो भाई वो स्ट्रक्चर क्या है, जाइंट आयोनिक है, ठीक है, और उसमें स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स हैं, isn't it? So basically calcium chloride is a giant ionic compound with strong ionic bonds between oppositely charged ions. And it's got 2 marks. यानी कि आपने बताया कि giant ionic है और आपने बताया कि strong ionic bonds हैं. You're scoring 2 marks for that. You should know that which things carry marks. Whenever you're writing an answer, right? This should be very clear, like very clear. This question is more like organic compounds. Ethanol and butanol are both alcohols. Of course, yes. They belong to alcohols homologous series. Describe the manufacture of ethanol from ethene. तो I think आप ethene को react कराएं steam के साथ in phosphoric acid जो catalyst और I think heat, right? So you say that के ethene is reacted with steam under heat and in the presence of phosphoric acid as a catalyst. आपको याद होगा ना, C2H4 plus H2O gas gives us C2H5OH और यहाँ पे जो catalyst था that was H3PO4. Now, part B. Ethanol is used fuel and as a constituent of alcoholic beverages. State one of the use of ethanol. So I think as a solvent, making vinegar. So ethanol is used as a solvent, as an antiseptic. Construct an equation to show the incomplete combustion of ethanol. Carbon bana le CO bana le instead of CO2. C2H5OH plus O2. Don't make CO2. Make C or CO. चलिए CO बना लेते हैं. Plus H2O. ठीक है, तो आप बैलेंस कर लें. 2, I think 2 and 3.
Ethanol can be oxidized to form ethanoic acid. Name a reagent that can be used for the oxidation. Potassium manganate use कर लें, potassium dichromate use कर, but normally we use acidophile potassium manganate. Any oxidizing agent. Draw the structure of an alcohol that is an isomer of butanol. तो butane 2 बना लें, isn't it? देखें, तो ये ब्यूटेन 2 हो गया. सो बाकी एच बना लें. यहाँ पे मेनी स्टूडेंट्स वो ओ और एच में बॉन्ड नहीं दिखाते, फिर हम आपका मार्क काट देते हैं. ओ और एच में भी बॉन्ड दिखाना है. उसने कहा शो ऑल द बॉन्ड्स बी ऑल द एटम्स. सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. जीता. सर अगर हम करें ऐसे कि सी सी फिर ऑक्सीजन फिर 2 सी बाकी हाइड्रोजन कनेक्ट कर दें तो सही होगा. हाँ होगा, यस. लेकिन उसने कहा है, लेकिन वो सही तो होगा, लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं है. रीजन बिकॉज उसने कहा है कि जो आप आइसोमर बनाएंगे ना अल्कोहल का, वो भी अल्कोहल होना चाहिए. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल. वो जो आप कह रहे हैं वो ईथर कह रहे हैं. ओके ओके गॉट इट. It can be 2-methyl-propanol as well. I mean, जो like आप 3 कार्बन की चेन बनाएं, ठीक है, और एक ब्रांच लगाएं CH3 की जो मिडिल कार्बन से, और वही मिडिल कार्बन से आप एक OH भी लगा दें, तो you know it can be 2-methyl-propene-2-ol, it can be 2-methyl-propanol, it can be butane-2-ol. You can make any structure, but it should be an alcohol. तो butanol बना सकते हैं, फिर 2-methyl-propanol बना सकते हैं, और 2-methyl-propane-2-ol भी बना सकते हैं. Any of the alcohols will serve the purpose. There you go. So it's butane 2-ol, by the way, isn't it? It is butane 2-ol. आप 2-methyl-propanol बना लें, आप 2-methyl-propane-2-ol बना लें, आपकी मर्जी है. I think this is the easiest, isn't it? Simple. Butanol can be converted into an alkene by loss of water molecule. ठीक है. Draw the structure of the alkene formed, showing all the atoms and all the bonds. I think the butene बन जाएगी, isn't it? तो अगर butanol से water remove करेंगे तो butene बन जाएगी. Is that so? Butene can be polymerized to give polybutene. What type of polymerization is this? Addition, क्योंकि alkene है. It's non-biodegradable. What does the term non-biodegradable mean? Which cannot be decomposed by bacteria or fungi, right? So it means non-biodegradable. ऐसा नहीं कहते हैं. A substance is non-biodegradable as it is not decomposed by bacteria or fungi. यहाँ आप कह लें by microorganisms, perfectly fine. यहाँ which actually does not decay or which is not decomposed naturally, that's fine. Photosynthesis is a reaction that occurs in the leaves of green plants. ठीक है. और ये reaction endothermic है, catalyzed by enzymes, absolutely yes. And draw the energy profile diagram. तो I think it's simple, है ना. तो axis पे energy है हमारे पास, label the axis, energy. ये चलें reaction pathway कर लेते हैं. ठीक, या course of reaction कर लें, या progress of reaction कर लें, कोई भी वर्ड लिख लें. चूँकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आई थिंक इट गोज लाइक दिस. ठीक है, तो ये 6CO2 प्लस 6H2O और ये C6H12O6 प्लस 6O2. ठीक, दिस इज
डेल्टा एच, एक सेकंड लाइन बहुत डिस्टॉर्टेड सी बनी है. ओके, दिस इज डेल्टा एच एंड दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. ठीक हो गया. Now, what is an enzyme? Oh, I hope you remember it's a biological catalyst. Enzyme is a biological catalyst. State the effect of enzymes on reactions. They speed up the reaction by providing by providing a pathway which has low activation energy. So they speed up the rate of reaction. बस कुछ ने क्या state करना, explain नहीं करना, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह करते हैं. तो state the effect. Explain why the rate of photosynthesis increases as temperature increases. तो अगर temperature बढ़ाएंगे particles energy gain करेंगे, they'll hit more frequently and rate बढ़ जाएगा, frequency regions बढ़ जाएंगी, right? तो as temperature increases, okay, particles gain energy and start moving faster. Frequency of effective collisions increases, therefore rate of photosynthesis increases. लेकिन आपको पता ना कि जहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, हम सर्टेन लेवल तक टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं. उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेट इनफैक्ट जो है वो कम होना शुरू कर, क्योंकि एंजाइम्स गेट डीनेचर्ड एट हाई Can I go टेम्परेचर्स. back to the niche diagram? And draw the energy profile diagram. तो आई थिंक इट्स सिंपल है ना. तो एक्सेस पे एनर्जी हमारे पास, लेबल द एक्सेस एनर्जी. ये चलें रिएक्शन पाथवे कर लेते हैं. ठीक, या कोर्स ऑफ रिएक्शन कर लें, या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कर लें, कोई भी वर्ड लिख लें. चूँकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आई थिंक इट गोज लाइक दिस. ठीक है, तो ये 6CO2 प्लस 6H2O और ये C6H12O6 प्लस 6O2. ठीक, दिस इज डेल्टा एच. एक सेकेंड लाइन बहुत डिस्टॉर्टेड सी बनी है. ओके, दिस इज डेल्टा एच. Oh, this is basically energy of activation. Sorry, guys. I think मैंने उल्टा mark कर दिया. This red one is energy of activation, and the blue one I'm making is delta H, right? and this is energy of activation. ठीक हो गया. Now, what is an enzyme? Oh, I hope you remember it's a biological catalyst. Enzyme is a biological catalyst. State the effect of enzymes on reactions. They speed up the reaction by providing by providing a pathway which has low activation energy. So they speed up the rate of reaction. बस कुछ ने क्या state करना, explain नहीं करना, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह करते हैं. तो state the effect. Explain why the rate of photosynthesis increases as temperature increases. तो अगर temperature बढ़ाएंगे particles energy gain करेंगे, they'll hit more frequently and rate बढ़ जाएगा, frequency regions बढ़ जाएंगी, right? तो as temperature increases, okay, particles gain energy and start moving faster. Frequency of effective collisions increases,
Therefore, rate of photosynthesis इंक्रीजेस। लेकिन आपको पता ना कि जहाँ पे एंजाइम्स होते हैं हम एक सर्टेन लेवल तक टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट इनफैक्ट जो है वो कम होना शुरू कर, क्योंकि एंजाइम्स गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी रिएक्शन अगर एंजाइम यूज हो रहा है कैटलिस्ट, तो आप वहाँ पे टेम्परेचर एक्सेसिवली नहीं बढ़ा सकते, एक सर्टेन लिमिट होती है बढ़ाने की टेम्परेचर। हाँ, कोई और कैटलिस्ट जितना मर्जी बढ़ा ले टेम्परेचर, अनलेस कंपाउंड डिकम्पोज ना कर जाए। ठीक है, और एंजाइम्स में अनलेस एंजाइम जो है वो डीनेचर ना कर जाए, so there's a restriction to increasing temperature. Okay, so guys, I hope that you enjoyed learning. Question 3C. And isoelectron. Okay, so this is question 3C. Sorry, B3A. This is question 3C. वो कहता है aqueous sodium sulfate can be used to prepare barium sulfate. कि वो बेरियम आयन और सल्फेट आयन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. In an experiment, 20 cm cube of 0.55 mole per dm cube, ये barium nitrate. What is barium nitrate? It's barium ions, by the way. Calculate the maximum mass of barium sulfate that could be made. तो आप पहले मोल्स निकाल लें बेरियम नाइट्रेट के. जो मोल्स बेरियम नाइट्रेट के निकलेंगे वही मोल्स बेरियम आयंस के भी होंगे, राइट? क्वेश्चन 4C. अच्छा, ओके. This is question 4 and you're saying C. He says you have to predict the products of electrolysis of concentrated aqueous calcium chloride. देखें, when I say concentrated aqueous calcium chloride, so concentrated aqueous calcium chloride में एक तो calcium ions होंगे, एक chloride ions होंगे, एक H positive ions होंगे, एक OH negative ions होंगे. Now at the cathode, H positive ions जाएंगे और calcium ions जाएंगे. Attract दोनों ही होंगे, लेकिन discharge कौन करेगा? H positive ion. तो hydrogen gas बनेगी, क्योंकि जो calcium ion discharge नहीं कर सकते. They can only discharge in molten liquids, not in dilute or aqueous solutions. फिर on the anode, Cl negative भी जाएगा, OH negative भी जाएगा. लेकिन चूंकि chloride ion की concentration high है, why? Because it is concentrated, so chlorine gas will be produced. Do I make sense, Musa? So at the cathode, it will be hydrogen. At the anode, it will be chlorine. Okay. Question 6A. तो फिर Question 6A. So this is question 6 and part A. जी, ये जो आप क्वेश्चन पार्ट ए, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, राइट? तो जरी बात है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक हो तो रिएक्टेंट्स नीचे होते हैं, प्रोडक्ट्स ऊपर होते हैं, एज यू कैन सी इन दी reaction that इन दिस occurs in the डायग्राम. ठीक है, तो रिएक्टेंट्स नीचे हैं और प्रोडक्ट्स ऊपर हैं. फिर उसने कहा यहाँ पे मार्क कर दें एंथैल्पी चेंज. तो आई थिंक मैंने यहाँ पे शायद वो उसको मार्क तो करा था, लेकिन शायद मैंने गलती से उसको मैंने उसको लेबल गलत कर दिया. ठीक है, इसलिए आई हैव टोल्ड यू दैट कि प्लीज रेक्टिफाई इट. सो जहां मैंने डेल्टा एच लिखा है ना, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, और जहां मैंने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लिखा है वो डेल्टा एच है, प्लीज. ओके,
Sorry, Claire. So I hope that you all are working hard, guys. Or please, इतनी ज़्यादा tension नहीं लेनी exam की, just relax, right? वैसे भी आपका रमजान चल रहा है तो आपकी अच्छी routine चल रही होगी of sleeping and learning and fasting, right, and everything. So you should utilize this time up to maximum, right, and just work hard and leave rest to Allah. कुछ अल्लाह ताला पे भी faith होना चाहिए. आपका काम है मेहनत करना, ठीक है? उसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, उसका रिजल्ट तो अल्लाह ताला के हाथ में है, right? You just give your best shot and then leave rest to Allah. तो वो अल्लाह ताला पे faith भी बहुत जरूरी है. You need to have faith in God. और फिर जो हो, just actually, I mean, whatever he does, you should be content with it, right? और एक बात याद रखिएगा, मेहनत से लिए हुआ C grade is far better कि एक बच्चा एग्जाम में चीटिंग करे और A star ले ले. An A star with cheating will go down the drain sooner or later. But the C grade with mehnat will take you a long way. I've seen many C grades ruling the world and many A stars going down the drain. I'm not saying that you should not strive for an A star. Strive for an A star, right? मेहनत करें आप, लेकिन उसके बाद जो आपका रिजल्ट आता है, just you have to be content with God. It is how you should live life. Okay, so guys, thank you very much. So take care. See you all tomorrow.